Please, someone of you confirm me that can hear the sound clearly. कोई इशू तो नहीं है, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी प्लीज someone of you confirm, आप लोगों को आवाज आ रही है? आप इससे कोई कंफर्म कर दे। Okay. Okay, class. Last time we have covered the 3 cases of this chapter in test of jet, in which we are discussing how you can find out the forces which jet will impact on different surfaces. फिर इसके हम लोगों ने 6 cases cover किए हैं, and today we will cover the rest of the 4 cases. I have told you that we have 2 to 10 cases. So today we will cover the last 4 cases of this chapter, and this is the content of the midterm from my part, this whole chapter. ठीक है? So इस वीक हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, एंड ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल भी फिलहाल अभी से वीक के लिए है, so let's see. अगर तो ऑन कैंपस है then accordingly we will schedule the classes, और अगर तो ऑनलाइन कंटिन्यू होती है then I will continue that theory and I will start with the next chapter. Okay? So today we'll start with case number 7, and this is regarding the force of the jet on the series of the moving curved plates. In case number 5 and 6, we have covered the curved surfaces, but they were stationary curved surfaces. And I have told you that you need to just revise whatever you have done till now, so that you can easily understand the concept of the moving curved surface. These are not difficult cases, but you have an additional concept of the velocity triangle. फिर इसमें जब आपकी प्लेट कर्व्ड हैं और वो मूव कर रही हैं, तो इसमें जो वेलोसिटीज हैं, यू हैव मोर देन वन वेलोसिटी. So all those velocities will basically are the vector quantities. So they will give you a triangular pattern या triangular distribution होगी on velocity की. You will have the velocity triangles. So that is the additional concept in this case, and remaining everything is same. ठीक है, basic जो procedure है वो same है. So additionally, जो velocity triangles हैं, we will discuss them at the first. That will be first step. And then you will draw the figure of the bucket. तो जो भी given data है उसके लिए आप velocity triangles generate करेंगे. Then your figure is complete and you can apply the impulse momentum equation along the required direction. Okay. Now this is a basic discussion. Please make sure I will tell you all the steps to draw the velocity triangles one by one. So you have to follow me. कोशिश करें कि जैसे जैसे आपको steps बता रही हूँ, you should be able to understand them one by one. And according to those steps, you can have the general or standard velocity triangles. आपके triangles general हैं, these are not applicable to all the machines as it is. लेकिन आप अपनी machines के particular designing conditions के लिए इन्हीं triangles को modify कर सकते हैं. ठीक है, आप लोगों ने lab के अंदर कुछ machines पढ़ी हैं, and you have probably also drawn some velocity triangles. उन triangles से आपको ये idea हो गया होगा that every machine is having some particular design angles. तो अगर आप इन्हीं स्टैंडर्ड ट्राइंगल्स को मॉडिफाई करेंगे बाय यूजिंग दोज वैल्यूज ऑफ द एंगल व्हिच यू हैव फॉर योर मशीन, तो आपको वही ट्राइंगल्स मिल जाएंगी जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हैं. ठीक है, सो यू डोंट नीड टू मेमोराइज द ट्राइंगल्स फॉर ईच मशीन, बट यू नीड टू नो द डिजाइन पैरामीटर्स पर्टिकुलरली ऑफ द एंगल. तो आप इन्हीं ट्राइंगल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर योर मशीन. So in this case, this is the bucket which is similar to the half bucket of the Pelton wheel, and this bucket is similar to your case number 6. In case number 6, we have covered the same bucket, but it was stationary, and in the case number 7, we are considering it to be moving. Okay, so if it is moving, you will have the velocity triangle. Now listen to the steps carefully how you will draw the velocity triangles. First of all, you will draw the bucket, you will show the reflection angle, and now these are your tips, inlet tip and the outlet tip. Now what are the known data? You know the velocity of the jet, that is v1, वो आपको known है. Also you know the velocity of the plate, u1. ठीक है, inlet और outlet tip पे जो velocity है plate की वो आपको known है, and also you know the velocity with which the jet is entering. So v1 is also known to you. Now velocity is a vector quantity. It will have a certain direction and magnitude. It means that if you are required to draw that velocity on scale,
ऑन द पेपर यू कैन डू दैट। ठीक है, आप उसको उसकी एक्सल डायरेक्शन में और एक्सल मैग्नीट्यूड में शो कर सकते हैं। दिस इज व्हाट यू विल डू ओवर हियर। तो दिस इज V1। अभी आप VW1 को इग्नोर कर दें, आई विल टेल यू लेटर ऑन व्हाट इज दिस VW1। So this is V1, say you know its value, say it is 10 meters. So you have selected a suitable scale, and in this case theta 1 is 0. It means that your jet will enter horizontally into the bucket. ठीक है, ये बिल्कुल आपकी प्लेट यहाँ से हॉरिजॉन्टल है, जेट इसी के टेंजेंट एंटर होगा। So this is the direction of V1. You know the direction of V1, you know the magnitude. On scale, you can draw a vector which shows V1. That vector is termed as AB over here. So that is the first step. You will draw V1 on scale, which is entering tangent to your bucket inlet tip. Then you know U1. U1 क्या है? That is the velocity of the plate at the inlet tip. You know its value, you know its direction, that it is forward or backward, you know its direction. So also draw U1 on scale, and starting point should be same at point A. Okay, so this is V1 from point A, and this is U1 from point A, that is AC. Now these are your known values. The difference of this V1 and U1 will give you VR1. Okay, so if you can recall the basic concept, whenever you are having a moving case, the concerned velocity is the relative velocity, not the simple absolute velocity. यही डिफरेंस है आपके केस नंबर 6 में, केस नंबर 7 में, that if your plate is moving, your concerned velocity is the relative velocity, not the simple velocity. इन दोनों का डिफरेंस क्या है? That is VR1, and on scale it will give you the magnitude जो कि इन दोनों के डिफरेंस से आ रहा है, it is CB. So finally your jet will enter with the relative velocity VR1 into the bucket. Now if you see, these velocity vectors are not forming a triangular pattern, लेकिन हम इसको velocity triangles कह रहे हैं. So don't get confused with the term. Basically it is a triangular pattern, but it is modified because of this angle theta 1 which is put as 0. ठीक है, तो अगर आप एंगल 0 पुट करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत से जो कंपोनेंट्स हैं आपके आइदर दे विल बिकम टोटली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, डिपेंड कर रहा है कि आपने कौन सा एंगल 0 पुट किया। ठीक है, तो इस केस में आपका थीटा 1 0 पुट किया है, दैट इज रिड्यूसिंग योर ट्राइंगल इनटू दीज लाइंस। अभी आपको क्लियर हो जाएगा फर्दर अगले और डिस्कशन से, so it will be clear to you. So that is why this triangle is reduced to these lines. Finally, VR1 will enter with your jet will enter with VR1 into the bucket. It will glide on the surface and it will leave the bucket from the outlet tip. Practically, your VR2 will be less than VR1 because of the friction on the surface. So this is your VR2. Okay, now what is your next step? VR2 की वैल्यू आपको नोन है, you have drawn that on scale EG. ठीक है, उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड आपको नोन है, so it is EG. What is your next step? Your next step is to draw U2. U2 क्या है? That is the velocity of the plate at the outlet tip. It is again known to you. So from point G, draw a horizontal line GF which shows the magnitude U2. ठीक है, ये आपको नोन है, उसकी वैल्यू को ऑन स्केल आप ड्रॉ करें in the form of this horizontal line GF, that is U2. Next step is to connect this point E with this point F. क्या आपके पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगी. This EF is your vector V2. This is the absolute velocity at the outlet tip of the bucket. Okay, ये V2 कैसे आ रहा है? If you see at the inlet tip, you were getting VR1 from the difference of V1 and U1. Similarly, over here you are getting V from this VR and U. इनके डिफरेंस से आपके पास यहाँ पे ये V आ रहा है. ठीक है, सॉरी, इनके एडिशन से आपके पास यहाँ पे V आ रहा है. Okay, so this is how in the inlet tip you were moving from V to VR, but at the outlet you are moving from VR to V. Now next step is to draw a vertical line from E till it intersects this line GF. ठीक है, ये intersect करेगी point H पे. So this line EH is termed as VF, and respectively this line HF is termed as VW. Now what is this VF and VW? VF is the flow velocity and VW is the whirl velocity. ठीक है, अभी ये मैंने आगे मेंशन किए हैं. I have written them down in the parameter as well, so you will be clear about the terms.
So Vf is the flow velocity and Vw is the work velocity. And what are these actually? Vf is the vertical component of the speed and Vw is the horizontal component of this wheel. ठीक है, तो जो भी आपके जेट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है Vw और उसका वर्टिकल कंपोनेंट है Vf. Now further, in this case you have two angles. One is theta and one is beta. In the previous cases we were having only one angle, that was theta, because उसमें velocity आपके पास एक ही थी जेट की, that was v. ठीक है, उसमें कोई u नहीं है, कोई r नहीं है, तो उसमें एक ही एंगल था theta, which was termed as wave angle. Now in this case you have two velocities. One is the velocity with vr is the velocity with which it glide on the surface. ठीक है, तो ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है जेट की और ये फाइनल वेलोसिटी है जिसे वो जेट बकेट में ये दोनों एंगल्स आपको दे रहे हैं थीटा और बीटा. The angle which we will make with horizontal axis, that is beta, and the angle which this VR will make with horizontal axis, that is theta. So you have two angles in this case, theta and beta. VR का एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा और V का एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा. So these are your basic terms and this is your basic step to draw the velocity triangle at the inlet and outlet tip. क्या हर केस में more or less आपके पास basic triangles नहीं है. Further, you can modify these triangles by keeping the angles which is particular for your machine. जैसे इस केस में हमने थीटा 10 पुट किया है तो उसने इस पूरी ट्रायंगल कर दिया. ठीक है, अब आप अज्यूम करें यहाँ पे अगर आपने थीटा 10 पुट कर दिया, इट मीन्स दैट योर VR is horizontal है तो उसके respectively आपकी V भी horizontal है. So that is why your triangle will reduce to these lines by putting theta 1. Now what is this W1? This is the of this V1 along the horizontal axis. ठीक है, अब इस केस में आपका जेट totally horizontal ही है. That is why your V1 is equal to VW1 and over here you don't see any V क्योंकि सारी की सारी जो velocity है जेट की वो horizontal है. You don't have any vertical component. That is why over here you don't have any. Also theta 1 क्या है? 0 है. Theta 1 is the angle of this VR1 with the horizontal. That is 0. What is beta 1 in this case? Beta 1 is the angle of V1 with the horizontal. So that is all 0 in this case. In this case, theta 1 and beta 1 both are 0. It means कि initially जिस एंगल से आपने अपने जेट को गाइड किया है वो भी 0 है और फाइनली वो 0 डिग्री पे ही एंटर हो रहा है इन द बकेट. Okay, so this is the general step to draw the triangle. Now you can keep these points in mind. And the first one is that direction of VR1 and VR2 should be tangential to the inner and outer tips of the plate. So it is very important when you draw the triangle. If I keep it simple, it means that आप देखें VR1. Now there is a mistake in this figure. Practically VR1 is more as compared to VR2, but it's shown if you see in the vector when VR1 vector की length थोड़ी सी कम show की है as compared. So you can do that correction with you. VR technically should be more. It should not be. इसको मैंने exaggerate इसलिए किया है. It is shown slightly on a higher scale so that you can easily understand the triangle. Okay, so I have a limitation because I have to show it in the slide. इसलिए यहाँ पे ये simpler है inlet की, इसमें सिर्फ lines हैं. It is easy to understand, but over here you have the triangle. इसकी understanding of formation को properly explain करने के लिए मैंने ये थोड़ा सा large scale पे draw किया. Okay, but make sure VR2 should be less than VR1. And accordingly, अगर आप देखें VR1 में मैंने शो किया है, अगर मैं VR2 से कम शो करूँगी, then the triangle will be a very small size. So it will not be easy for you to see what I have drawn in the figure. Okay, so just to make it clear to you, I have slightly shown that on a scale. Otherwise, magnitude of VR2 is always less than VR. Now, what is this first point says? VR1 and VR2 will be tangent to the bucket. It means that if you see these figures, VR1 is tangent to this bucket point. ये bucket की direction में enter हो रहा है. और VR2 आप ये देखें, यही ये जो bucket
की डायरेक्शन है इसी को आप एक्सटेंड करें फर्दर एंड देन दैट विल बी योर VR2। बिल्कुल आपने हॉरिजॉन्टल या किसी और एंगल से ड्रॉ नहीं करना। बाय टेंजेंट टू द टिप्स मींस ये इस पॉइंट पे टेंजेंट, so it should be parallel in reverse. So this is the first mistake we can get if you have not drawn the directions of VR correctly here. Now, second, for the shockless entry and the shockless exit, VR should be exactly equal to V minus U. Now, what does this point mean? Practically, आप assume कर लें that V1 is 10 minutes and U1 is 6. इन दोनों का difference आपके पास VR देगा 4, ठीक है? It means कि अगर आप ये वेक्टर V1 फाइंड करते हैं तो ऑन स्पेस पे बिल्कुल V को टच करना चाहिए, ठीक है? ऑन पेपर है, बट it is possible that practically you are not having a very smooth entry. जब आपका जेट टिप को टच करके बकेट में एंटर हो रहा है, you can have the losses due to the shock entry or shock exit. ठीक है? जितना आप एंट्री और एग्जिट स्मूथ है उतने ही आपके एनर्जी में लॉसेस कम है। So there is a possibility that practically this difference or this equation is not valid. Okay, लेकिन आप assumption कर रहे हैं that you don't have any losses at the entry or exit, then in that case VR is equal to V minus U. ये वेक्टर यानी कि satisfy कर रहे हैं, okay? ये figure satisfy हो रही है। Okay, last point in this regard, that is these velocity triangles are assumed. हमने ये shape assume की है, so you have to apply the check. What is that check? That VR2 cos of theta 2 should be less than U2. So over here, this whole base is U2 and this GH is VR2 cos of theta 2. इस figure में यही show हो रहा है that this VR2 cos of theta 2, which is your GH in this figure, that is less than this U2. If this check is satisfied, when you put the numerical values in the equation, आपके calculate करने हैं दोनों factors and VR2 cos of theta 2 is coming to be less than U2, it means कि ये आपकी figure को justify कर रहे हैं। लेकिन अगर ये check satisfy नहीं होता, it means कि आपने जो shape draw की है triangle की, that is not correct. Then you need to modify this. वो आपने modify कैसे करनी है वो मैं आपको अभी next slide में बताती हूँ, ठीक है? So this is the additional thing when you are having a moving curved surface. Now remaining everything is same जैसे आप लोगों ने पहले काम किया, okay? So we'll review that. So next you will consider a jet of the water striking at the inlet of the series of the moving curved plates as shown in the figure. Over here, D is the diameter of the jet, A is the cross-sectional area, that is pi d square by 4. Q is the discharge, that is A into V. V is the velocity of the jet, and M is the mass flow rate. It is rho is the density of the fluid. Now consider inlet and outlet tips and velocity triangles at both the tips. अब ये सारे वही पैरामीटर्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, but they are written over here for your reference. So V1 is the velocity of the jet at the inlet. U1 is the velocity of the plate at the inlet tip. ये peripheral velocity है. These are the peripheral velocity means that it is the velocity which is available at the periphery of any surface. तो आउटलेट टिप और इनलेट टिप की जो पेरिफेरी है या जो टिप्स हैं उन पर जो वेलोसिटी है that is your U1 and U2. So over here we will consider that these two are same. Now VR1 is the relative velocity at the inlet tip minus 1, and in this case the theta 1 and beta 1. Theta 1 is termed as vane angle. ये हम लोगों ने पिछले केस में भी पढ़ा है that theta is termed as vane angle. Beta 1 is termed as guide blade angle. यहाँ पर प्लेट लिखा है तो it can be guide blade or guide blade angle. ठीक है, अब आप लोगों ने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि पिछले केसेस में जहाँ पे आपकी कर्व सरफेस थीटा इज ठीक है, बट ओवर it is not about V or VR. It is about the fact कि आपका जेट फाइनली किस वेलोसिटी से बकेट में एंटर हो रहा है, ठीक है? तो जब आपकी प्लेट स्टेशनरी है, you don't have any VR, it is V. So angle theta in those cases are measured with respect. But in these cases where the plates are moving, the concerned velocity is VR. Your jet will enter in the bucket with VR. So over here theta is measured with respect to that velocity VR. ठीक है, तो ये फाइनली वो
एंगल है जिसपे आपकी फाइनल वेलोसिटी जेट में एंटर हो रही है. ऑल्सो बीटा वन इज द एंगल जिसको हम गाइड बेड एंगल कह रहे हैं. आप लोगों ने टर्म पढ़ी होगी. गाइड बेड क्या करती हैं? वो गाइड करती हैं वाटर को. तो ये इनिशियल गाइडेंस है वाटर की टुवर्ड्स द बकेट फाइनली. So in this case, that is also zero. Similarly, at the outlet tip, you have all the same parameters. Now, if you see, I have initially missed the terms VW2 and VS2, so I have written them for your reference. VW2 is the outlet tip. It is the horizontal component of the sleeve. Also, VF is the velocity of the flow or the flow velocity at the tip. VF2 आप कैसे find करेंगे? It will be V2 sin of theta 2 and VW2 will be V2 cos of theta 2. So this is the additional thing over here. Now, remaining things are same. If you have to find out the force F, you will find out Fn and Ft. They will be computed by applying the impulse momentum equation along the x and y axis. Okay, the resultant will give you F and alpha. So first of all, for that you will apply the impulse momentum equation along the x direction. That is, summation of the forces is equal to mass to rate into change in the velocity along the x axis. अब इस केस में आपकी जो concern velocity है, that is relative velocity. Over here you will see it is the difference of the relative velocity along the z direction. What is now additional over here? What you need to understand that you can also find out Fn by not only using the relative velocity, but also you can find out the relation for Fn using the whirl velocity. VW के भी आप find ठीक है. इस केस में मैं आपको नबील अपने माइक म्यूट करें. अच्छा अच्छा, और सुनाओ नबील सर की हाल है? तो थोड़ा सा आप लोग दरमियान में चेक करते रहा करें प्लीज कि आप लोगों के माइक अगर अनम्यूट होते हैं दे कॉज अ डिस्टर्बेंस. ओके, सो आई was saying that in this case you can also find out the value of Fn using this whirl velocity. ठीक है, तो इस केस में मैं आपको इन दोनों वेलोसिटी से रिलेशंस डिराइव करना बताऊंगी, बट दैट इज योर यू कैन यूज द अप्रोच व्हिच यू आर कंफर्टेबल विद. जो भी approach आपको, both of the approaches will give you the same equation. ठीक है, so either it can be with VW or it can be with VR. VR is a relatively general approach क्योंकि finally आपका jet VR से enter हो रहा है. ठीक है, लेकिन VW क्या है? VW is basically that velocity which is practically responsible to move the plate. horizontal component है velocity का. ठीक है, तो इसलिए आप इसके थ्रू भी इसको फाइंड कर सकते हैं. So first of all, we'll see how you will find out the relation using VR 2x minus VR1x. बिल्कुल सिंपल है. VR को स्टेप में करेंगे. That is the horizontal component of this V2. It is acting in the negative x direction. It is the minus VR2 cos 2. And what is VR1x? In this case, your VR1 is totally horizontal. So VR1x is equal to VR1. ठीक है, इस केस में VR1y 0 है. तो हम लोग FT फाइंड करेंगे. वहां पे VR1y क्या आएगा? 0 आएगा. ठीक है, तो Fn is coming to be rho Q VR2 cos of theta 2. This is for the real estate because we are using the actual values of VR1 and VR2. Practically, VR2 will be less than VR1 because of the frictional losses. Now, in some cases, you have to do the assumption that your plate is ideal. It can be due to any missing data. In that case, you can assume that there is no change in the velocity when the jet is moving on the plate, and VR1 and VR2 both are equal, and they are taken as VR. And in that case, equation is Fn is rho Q VR or V minus Q into 1 plus cos of theta 2. This is for the ideal plate. Now, as it is a moving case, so you will find out the efficiency and work done. So procedure to find out the efficiency is exactly same. Only the equation of Fn will vary हर केस में. जिस भी केस में आप efficiency find कर रहे हैं उसी केस की Fn की वैल्यू आपने यूज करनी है. Remaining the steps are same. Work done per second by the series of the moving soft plates, that is Fn into U. So this is your equation for Fn.
या आप रियल केस वाली इक्वेशन यूज कर रहे हैं, इसी को आप कन्वर्ट करें हेड में, दैट इज p over gamma q, and finally this will be your equation for the output power in terms of the head. Then input power in terms of the head is v square by 2g. Their ratio will give you the efficiency in percent. I have told you initially, and also to the call, please remember that this efficiency is the hydraulic efficiency. It is giving you that percentage of the hydraulic energy which is converted into the mechanical energy. आपकी मशीन की टोटल एफिशिएंसी नहीं है, ये सिर्फ उस पार्ट की एफिशिएंसी है जहाँ पे हाइड्रोलिक एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट, ठीक है। फर्दर मैकेनिकल को आपने इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है, यू आल्सो हैव टू ओवरकम सम फ्रिक्शनल लॉसेस। तो ये सिर्फ एक पार्ट है एफिशिएंसी का, इट इज नॉट द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। नाउ वी विल डिस्कस द अल्टरनेटिव way to find out Fn, that is through VW. So it will be VW2 minus, so VW2 from this triangle is U2 minus this VR2 cos of theta 2, and VW1 is equals to VW, sorry, V1. So that is the only difference over here. Remaining is the simplification, and this is your equation for Fn. And if you see, this is exactly similar to what you have derived using the concept of V. Okay? So this is same. This is for the real state. For the ideal, you can consider that VR1 and VR2 both are equal. So Fn is rho Q V minus U or VR into 1 plus cos of theta 2. Okay. Now, if you remember, we have discussed that you also need to apply the check on the shape of the triangle. That is required when you are using the concept of VW. It is not required in case of the relative velocity. So VW के केस में आपको ये चेक अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज योर VR2 cos of theta 2 should be less than U. कि अब अगर ये चेक सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इट मीन्स दैट योर शेप ऑफ द ट्राइंगल विच यू हैव अज्यूम्ड इज नॉट करेक्ट। आपने इसको मॉडिफाई करना है एंड दिस विल बी योर मॉडिफाइड फिगर। ठीक है, तो जो भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको सजेस्ट कर रही हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी ये वाली फिगर एप्लीकेबल है। इन योर केस योर VR2 cos of theta 2 is not less than U2, so आप फिगर को मॉडिफाई करेंगे अकॉर्डिंगली एंड इट justifies your numerical value. So this check is not for the release, it is only for the game. So that was regarding the Fn. अगर आपको कोई थोड़ा सा रिकॉल किया है, Fn is only used to find out the efficiency and the work done. You are not using Ft or F to calculate the efficiency. इसका रीजन सिर्फ यही है that Fn is the force which is likely to the movement of the bucket. Ft is not contributing in the movement of the plate, तो वो efficiency में भी participate नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन in fact they are harmful as they will exert some unwanted forces on the different parts of the. Only Fn is responsible for the conversion of the energies, and that is why efficiency is only used is computed only by using the normal force, not by the vertical component Ft. लेकिन अगर Ft आपको required है for that you will apply the impulse momentum equation along the y-axis, and this will be your final equation. So it is simple. बिल्कुल आपने जो काम पहले किया है, it is similarly on the same way. This is for the real plate, and for the ideal it will be minus rho Q VR sin of theta 2. Now if you compare your equations of Fn and Ft with the case number 6, so you can easily see that equations are exactly same, but there is only one difference. In case of case number 6, जहाँ पे आपकी plate stationary है, you have V in the equation. But in case number 7, where the same bucket is moving, you have VR not. So थोड़ा सा ना इन से जो similar cases है उनको compare करें, so that you can have an idea either you are getting the correct equation or not, or you are using the correct equation or not. Equations बिल्कुल सेम है, the difference क्या है that V is used in the stationary bucket and VR is used in the moving. Then find out F and find out alpha. So we will solve a numerical problem regarding this. This is the same problem 15 in your last case, case number 6. I have given you first part of the problem. I have told you that second part is with reference to case number 7. वही प्रॉब्लम है, लेकिन आज हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे. So in this case, your tear is moving with the velocity 10.5 meter per second.
आपने सिर्फ एफ एन फाइंड करना है और उसके रिस्पेक्टिव वर्क डन पर सेकंड और एफिशिएंसी. In this case, there is no need to calculate the force or FP. ठीक है. एरिया फाइंड करें. It is 5 d square by 4. Find out the charge. That is A into V. So this is the velocity triangle at the inlet and outer tip for this case. And if you remember, ये देखिए FN आपने calculate किया है. लिखिए equation इसकी. You have VR which you have to use, but you are given with V. आपको V given है. That is coming to be 10.5 meter per second. Also, you are not given with any idea about the friction losses. So consider the ideal case and the case VR1 and VR2 both equal, and that is 10.5 meter per second. Now simplify the equation and your Fn is coming to be this. Next work done per second, that is Fn into U. इसको आप head में convert करें by dividing this power by gamma into Q. Gamma is taken as 9.10. It is coming from rho, which is 1000. And this is the output power in terms of the head. Then the input power in terms of the head, that is V square by 2D. Their ratio will give you the efficiency. Now over here I have written a point regarding the angle theta. See, efficiency is directly depends Fn, and Fn is dependent upon the design parameter. तो theta की value को आप increase करते जाएं, theta की value को decrease करें, then your efficiency will increase. Okay? So cos of 0 will be 1. So that will give you the maximum ordinate of its Fn. जितना आप एंगल को कम करते जाएंगे एफिशिएंसी उतनी ही increase करता है. Efficiency is coming to be 75%. It is not a very bad efficiency. So it can be further increased if you reduce the angle theta. Okay, now case number 8. This is regarding the force of the jet on the series of the moving curved plate. But difference क्या है? That in this case, अब अगर इसमें theta 1 0 नहीं है, what you will see? You will see that at the inlet tip you will have the triangles. आपके केस नंबर 7 में थीटा को 0 पुट करने की वजह से रिड्यूस होके सिंक होके लाइन की फॉर्म में रह गई थी. ठीक है. लेकिन यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है दैट योर थीटा 1 is 0, so you can see the actual triangle. So this last week we can for few minutes again मुझे फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ. Okay, guys. So in this case, हम लोगों के पास outer tip की time they are exactly same to what we have discussed in case number 7. So inlet पे अब आपके पास कोई modification है because theta 1 is not 0 now in this case. So that you know V1 and you know U1, आप इन दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ करें and on the same magnitude using some suitable. So you know V1, this V1 is at angle beta 1 with horizontal. ये आपको known है कि किस angle पे है. Draw the vector AB. This shows V1
also show you one starting from this point A, which is also known to you. अब इन दोनों वेक्टर्स की वजह से आपके पास डिफरेंस आ रहा है. दिस इज वी आर वन. So this is VR1. Make sure when you draw this VR, it should be tangent to this inverted. ठीक है. अब उसके बाद आपके पास vertical line क्या है? This is VF1. This is the vertical component of this V1. Also, what is the CW1? This is the horizontal component of the C1. Okay, so everything is the same. अब आप इसे फिगर को देखें. इससे पुट थीटा 1 0 तो VR1 हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, VF1 0 हो जाएगा, बीटा 1 भी 0 है तो V1 भी उसके पैरेलल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा. ठीक है. So this triangle is basically reduced to your case number 7 case जहाँ पे आपके पास लाइन्स है. ठीक है. So consider a jet of the water striking on the series of the curved plates as shown in the figure, and consider the velocity triangles at the inlet and outer tip. So same parameters, बिल्कुल वही parameters हैं जो मैंने आपको अभी डिस्कस किए हैं. And can you recall कि ये bucket किस machine के similar है? It is similar to the bucket of turbo turbine. तो ये turbo turbine की efficiency का relation आपको दे रहा है. Last वाला आपको दे रहा था half bucket of the cultivator का. Similarly, for the outer tip, now remaining steps are exactly same. You need to find out f. For that, you will find out Fn and Ft by applying the equation along the x and y axis. Similarly, आपने अगर Fn find करना है, that can be done by using Vr or by using Vw. आप दोनों approaches से find कर सकते हैं, but over here I am using only the approach of the relative velocity. You can do with Vw as well if you want. Both will give you the same result. Okay. So this is the final equation for Fn. This is for the real plate. So this is quite simple. We just have to find out the components. VR2x or VR1x. For the ideal, it will be rho to VR cos of theta 1 plus cos of theta 2. Now, if you remember, we have discussed that you need to increase with Fn because Fn is that component which is basically responsible to move the plate. Ft is not contributing to any movement. Fn को अगर आपने इंक्रीज करना है, that can be done by simply making the angle theta 1 and theta 2 0. Okay, that will give you Fn maximum as 2 rho q VR. Practically, it can range up to 15 degrees. Depend करता है because sometimes you have the limitation on the side. You cannot make angle exactly 0. So it can be increased and you make the angle to 15 degrees. Next, find out work done per second, that is Fn into u. इसको आप head में convert करें by dividing it by gamma q. This is the equation. And this is the input power in terms of the head. It is v square by 2g, and the ratio of equation number 5 and 6 will give you the efficiency of the turbo turbine. Okay. Next, find out Ft by applying the equation along the y-axis, and this is the equation for the ideal case. For the ideal, take VR1 and VR2 same, and that is Ft over there. So F is the result of these two, and alpha is tangent inverse of Ft over Fn. Now we'll start a numerical problem for this. In this case, mass flow rate is given to you. आपको area given नहीं है, diameter given नहीं है, उसकी requirement भी नहीं है because in this case mass flow rate is directly given, which is equal to into Q. G1 is given, U is given, beta 1 is given, theta 1 आपको given नहीं है. इसी तरह आपको theta 2 भी given नहीं है, लेकिन आपको deflection angle given है 150. तो deflection angle से आप theta 2 find कर सकते हैं. It is coming to be 30 degrees. Please ignore this. Beta 1 is written twice, so this is the typo mistake. Fn is not given, P is not given. आपने ये find करनी है. Also, it is mentioned that VR2 is 80% of VR1. So it is 0.8 times VR1. तो अगर आप देखें इसमें आपको VR1 भी given नहीं है, वो भी आपने find करना है. मूविंग केस है तो इक्वेशन में VR होगा, V नहीं होगा. तो आपने पहले VR1 फाइंड करना है और आपको एंगल थीटा 1 नहीं गिवन है, आपने फाइंड करना है. For that, you will solve the triangle, add and let it, and you will find out the velocity and the respective angle. Then you will apply the equation to find out Fn and Ft. So VW1 is V1 cos of beta 1. This is basically the vertical component of, sorry, it is a horizontal component of C.
it is coming to be 22.65 मीटर per second. Then VW1 minus U1, ये देखिए वो है ये वेक्टर सी डी. आपने पी आर वन फाइंड करना है. दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस वी एफ वन एंड दिस वेक्टर सी डी. So CD will be VW1 minus U1. It is 10.65 meter per second. And what is the CF1? It is the vertical component of the C. It is the V1 side of beta 1. V1 आप find कर लें. That is the resultant of these two vectors. It is 15 meter per second. Beta 1 find करें by the tangent inverse of these two components. It is 44.6 degrees. Further, what is VR2? It is 0.8 times of VR1. It is 12 meter per second. Apply the equation. This is your Fn and power is Fn into U. Work done for weight find करें. This is the input power and this is efficiency. So in this case, we don't need to measure the Fg value and F. इसलिए हम इससे कैलकुलेशन कर रहे हैं. Okay, now the next case is regarding the force on a reducer or a diffuser. अभी तक आपने जो पहले 8 cases किए हैं, in those cases you are considering an open flow system in which your jet is moving under the atmosphere. So it is having only the velocity, it does not have any pressure energy. But when you are using a conduit, a closed conduit, in that case you will have the velocity, but also you will have the pressure energy. ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपकी एक ओपन फ्लो सिस्टम में और एक क्लोज फ्लो सिस्टम में. इसके अंदर जो हमारे लास्ट टू केसेस हैं वे आर ऑन अ क्लोज्ड कंडक्टर. सो यू विल सी दैट द फोर्स रिलेशन विल आल्सो हैव द pressure forces as well. Okay, so the first case in this regard is the force on a reducer or a diffuser. It is a plumbing fitting which is required to change the diameter of the pipe gradually. The same plumbing fitting can be used as a reducer or a diffuser depending कर रहा है कि आपके flow की direction क्या है. If you see, if the flow is from section 1 to section 2 over here, the area is reducing, so it is acting as a reducer. But if the flow is from 2 to 1, then area is increasing and it is acting as a diffuser. So same plumbing fitting can act as a reducer or a diffuser depending upon the flow direction. Now, if you further see, the section 1 and section 2 are at the boundaries of this fitting. Control volume is in between these two sections. D1 is the diameter of the pipe at section 1 and D2 is the diameter of the pipe at section 2. P1 pressure at section 1, P2 pressure at section 2. A1 are the respective areas. This P1A1 is the pressure force at section 1 and P2A2 is the pressure force at section 2. This V shows the direction of the flow. Now this is the force F which you have to compute. ठीक है, तो जितनी फोर्स आपका ये फ्लूइड इस पूरे कंडक्टर से एक्सर्ट कर रहा है, consider the same and equal force to be applied on the fluid by that fitting as well, that is F. So please make sure अगर आपके पास फ्लो की डायरेक्शन है 2 to 1, in that case V will be acting in the negative x direction और F की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी towards the positive x. So make sure डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली आपके इन वेक्टर्स की डायरेक्शन भी चेंज होगी. डोंट डू दिस मिस्टेक, otherwise you will not get the correct result. So in this case we are particularly considering a reducer. तो consider the flow. ये बिल्कुल वही बेसिक पैरामीटर्स हैं, ये आपके साथ सेक्शंस के पैरामीटर्स मैंने डिस्कस किए हैं. अब हमने बेसिकली एफ फाइंड करना है. ठीक है, तो इसमें आप फाइंड आउट एफ. This F is totally horizontal, so you will apply the impulse momentum equation only along the x-axis. So this is the summation of f(x) is equal to rho u v2x minus v1x. So over here you have this force v1a1 and this F and p2a2. These two are negative. What is v1 and v2? These are the velocities at section 2 and section 1. Both of these will be different because the area of the flow is different. Now in this case, if you see this equation, this V1 and V2 are dependent upon the flow condition. If you put a valve at the end of the section 2, आप उस valve को completely close कर दें, then no flow will take place in the pipe, and if the flow is zero, it means that the velocity will be zero. इस equation में से ये पूरा factor zero हो जाएगा अगर आपने flow को zero कर दिया. ठीक है, but pressure will not be zero, it will always be there. Because fluid is exerting a certain pressure on the surroundings about it.
Okay, so it will always have some value. आगे आपने ये थोड़ा सा गौर करना है कि अगर फ्लो जीरो है, प्रेशर एग्जर्ट प्रेशर की वैल्यूज तो होंगी, आइदर दे विल बी सेम और दे विल बी डिफरेंट। ये थोड़ा सा गौर करें, इसको हम आगे अभी क्लियर करते हैं कि प्रेशर की वैल्यू ड्रॉप करेगी या वो सेम रहेगी। So for this we will see a numerical problem. This is problem number 24, and this is a figure given to you, b1 b2 p1 b1 और HL आपको given है, आपने f की वैल्यू फाइंड करनी है। f की जो बेसिक इक्वेशन है that is same, this is your equation. Just see which parameters are missing in the equation. पहले आपको parameters calculate करें, then apply the equation to find out this f. p1 given है आपको, b1 given है, उससे आप a1 निकालेंगे, p2 आपको given नहीं है. Similarly, you know D2, so that will give you A2. Rho is taken as 1000. The charge is not given. V1 and V2 are not given. So these are the values. Sorry, V1 given है, V2 is not given. These are the values. पहले आप इन missing parameters को complete करें and then put the values in the equation and then you will get this set. So first of all, find out A1, A2. Apply the equation of continuity to find out V2 and एक पैरामीटर रहेगी आपके पास P2. For that you can apply the energy equation. So make sure flow is from section 1 to section 2. So you will apply so you will add the head loss in section 2. इसकी value आपको given है. If it is not given, take it as 0. And this is your P2. Put the values in the equation and this is your S value. Okay. Now case number 10. This is the last case of this chapter and it is again on a closed conduit, but in this case your plumbing setting is not only changing the dia, ये direction भी change कर रहा है. अब उसकी वजह से system कैसे complex हो रहा है that it is not entirely giving you a horizontal force. ठीक है, जैसे पिछले केस में आपकी force horizontal थी, so it was a quite simpler case, but in this case if it is a bend in the fitting, तो F जो है वो totally horizontal नहीं होगी. It will be at some angle. It means that you will apply the equation along x and y both and their resultant will give you F and alpha. So it is a plumbing fitting which is required to change the diameter and direction of the pipeline. Now it is this figure shows this is not a vertical curve, ये horizontal curve है. It means कि आपके दोनों pipes जो हैं they are on the same horizontal plane. ठीक है. So in this case, your V1 and V2 is equal because the pipe is on the same horizontal plane. Assume कर लें कि आपने इस pipe को, इस bend को अपने room के floor पे lay किया है. ठीक है, तो आप उसकी direction change कर रहे हैं, bend दे रहे हैं. It is not a vertical curve, it is a horizontal curve. That will make the V1 and V2 equal. So these are the basic parameters. So these are the all the same details which we have already discussed. अब इसमें सिर्फ difference क्या आएगा that your f is not horizontal, तो आपने equation दोनों directions में apply करनी है और respectively आपके पास ये जो forces हैं इनके भी components होंगे along x and y. So in this case your section 1 is totally horizontal but section 2 is inclined. Okay, ये बिल्कुल 90 पे भी नहीं है, ये inclined है. If it is on 90 then again it will become more simplified. एक component होगा और second नहीं होगा. एंगल जो है इस बेंड को आपने शो किया हुआ है विद दिस डिफ्लेक्शन एंगल फाई with the horizontal axis. Initially it is horizontal, so with respect to this horizontal axis the deflection is shown with this deflection angle phi. So to find out fx you will apply the equation along the x-axis. So it is minus fx, p1 a1 is totally horizontal. अब p2 a2 आप देखिए inclined है. This force is making angle phi with the horizontal axis. ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो फाई है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट विल कम विद कॉस ऑफ फाई. इट इज माइनस p2 a2 कॉस ऑफ फाई. माइनस है क्योंकि इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और इसका कंपोनेंट एक्ट करेगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में. ठीक. सिमिलरली फॉर v का एक्स कंपोनेंट आएगा v कॉस ऑफ थीटा से, v2 कॉस ऑफ थीटा से, and it is acting upward, so it will be positive. Remaining v1 is horizontal. Yes, it is as it is V1. Similarly, for Fy, you will apply the equation and this is your Fy. The resultant will give you F and angle alpha.
दिस इज रिगार्डिंग योर केस नंबर 10. अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसके अंदर हम वो फ्लो कंडीशन जो हम पिछले केस में डिस्कस कर रहे थे उसको अप्लाई करेंगे. So this is your problem number 25 from Douglas. It is your 10th problem in this chapter. D1, D2 and 5 are given. P1 given है आपको. अब इसमें दो केसेस हैं. पहला केस है that the flow through the pipe is zero. और इस केस के लिए आपने F और alpha find करना है. And in the second case the flow is 0.85 km. Okay, if the flow is zero, it will reduce your equation by making the velocity component zero. Equation आपकी बहुत ही स्पीड हो जाएगी. You will get a very lesser parameter in the equation. तो इसको हम देखते हैं आगे. So first of all, find out areas. Now when the discharge is zero, if discharge is zero, the velocities are zero, and in this case, the pressures will remain same. आप इसको verify कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? See the steps of second part. ठीक है. अगर आप सेकंड पार्ट वाले सारे स्टेप्स अप्लाई करेंगे इस पार्ट पे, यू कैन इजीली सी हाउ दीज टू आर सेम. एंड जस्ट थिंक लॉजिकली कि आपका जो प्रेशर है वो सेक्शन 1 से सेक्शन 2 पे ड्रॉप करता है बिकॉज ऑफ द लॉसेस ड्यूरिंग द फ्लो ड्यू टू द फ्रिक्शन. लेकिन अगर आपका पास फ्लो ही नहीं है तो ऑब्वियसली आपके पास जो प्रेशर है वो भी रिड्यूस नहीं हो रहा. इट विल रिमेन सेम बिटवीन द टू सेक्शन. ठीक है. लेकिन अगर फ्लो हो रहा है तो फिर वो प्रेशर ड्रॉप करेगा. In this case, this is your equation and this is Fx. Fy आपके पास क्या आ रहा है? F and alpha. Now the second case, V1 and V2, now it is not zero. It is coming from this Q over A1 and Q over A2. अब ये एनर्जी इक्वेशन आप अप्लाई करेंगे. Over here, HL is taken as zero because it is not given. So if you see, अगर आप पहले वाला केस देखें वहाँ पे V1 और V2 भी जीरो है, HL भी जीरो है. That shows your P1 and P2 are equal. That is why in the first case P1 and P2 both are coming to be equal. लॉजिकली क्या है कि फ्लो ही नहीं है तो आपके पास प्रेशर भी ड्रॉप नहीं कर रहा. So this equation will give you P2. It is coming to be 102.5 kilopascal. Find out Fx and find out Fy, F and alpha. So this is regarding this case, and this is the last problem for the discussion in this chapter, which is the last case. So with this, your chapter is completed, and you have to complete your assignment number 1. I have already shared it with you. तो कोशिश करें कि आप इसे कंप्लीट करें. एंड probably the submission of the assignment will be in hard form when you will come on campus. तो assignment आप अपनी ready रखें. As soon as you come to the university, you will submit your assignment. तो इसको हम कर सकते हैं. Hopefully we will have the clear idea about the next schedule. अगर तो नेक्स्ट वीक से ओपन हो रही है यूनिवर्सिटीज तो although I give you time for 1 week, तो वैसे भी टाइम जो आपको मिलता है असाइनमेंट के लिए मेरी तरफ से वो 1 वीक का होता है. कोशिश करें कि आप अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करें. इफ इट ओपन्स नेक्स्ट वीक देन व्हेन यू कम टू द क्लास ऑन कैंपस आप इसको सबमिट करवाएंगे. लेकिन अगर ये एक्सटेंड होता है ऑनलाइन शेड्यूल सारा, देन whenever you will come to the university you have to submit your all the assignments. तो हर चैप्टर की आपके पास असाइनमेंट है तो कोशिश करें कि इनको आप don't delay them. साथ में कंप्लीट करते जाएं so that you can submit them when you come to the university. It will reduce burden on you. अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो हम उनको बहुत क्लियरली ड्यूरिंग द लेक्चर से डिस्कस कर सकते हैं. तो कोशिश करें कि इसको सॉल्व करें. तो इश्यूज आपको हैं तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ बच्चों ने मेरे से डगलस का वो चैप्टर कहा हुआ था इंटेग्रल ऑब्जेक्ट का. सो आई हैव दैट इन द हार्ड फॉर्म. आई कुड नॉट शेयर इट टिल नाउ, लेकिन वो मैं इन लेक्चर्स की साइट के साथ आपके साथ शेयर कर दूँ. ठीक है. तो हार्ड फॉर्म में है, उसको पिक्चर पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी. तो फर्दर इसकी साइट मैंने आपको कर दी है ड्राइव पे. अगर आप इस वाला लिंक ही रेफर करेंगे यू कैन डायरेक्टली बी डायरेक्टेड टू द पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर. अदरवाइज मैं डगलस का चैप्टर ऐड करके आपके साथ ये लिंक शेयर कर दूँगी. ठीक है. सो यू कैन सी द स्लाइड एंड प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन द असाइनमेंट अगर अभी तक आप लोगों ने शुरू नहीं किया. So this is all from my side for this chapter and for today's lecture. Now if you have any question you can ask me one by one. I will take your questions. Okay, so questions हैं तो आप लोग प्लीज पूछें.
चलें. Okay, if you don't have any question, let me mark your attendance and then people are free. Okay, 56, 56, 57, Yes, ma'am. 56 present. okay, 57, 58, 59, 60, Yes, ma'am, 61, present. 60. 60, ठीक है, 61, 62, 63, 64, 65, 64 present, ma'am. 64. okay, 64, 65%. Ma'am, 59. Ma'am, आप 65%. हाँ जी 65 आई मार्क अटेंडेंस 59. अब आप लोग जाग रहे हैं ऐसा ऐसा कोशिश करें कि जरा बेल करके ना आगे पीछे जो आपके हैं ना आपको लग रहा है कि थोड़ा मेंटली जो है वो दे आर एब्सेंट इनको कहें कि जाग जाएं काइंड अटेंडेंस में मार्क करवा लें. ठीक है 59 मार्क कर लिया मैंने आपकी. 67 66 है 66 ओके 67 ठीक है 68 68. 69 70 Yes, ma'am. 70 present. okay 71 Yes, ma'am. President 71. 72 Yes, ma'am. 72. 73 Present. 74 75 Yes, ma'am. 75 present. 76 Yes, ma'am. 76 present. 77 77, ma'am. 78 Yes, ma'am. 78. 79 79 नहीं है. अच्छा किसने बताया है जी रोल नंबर 79 ठीक है 79 ओके 79 then 80 Yes, ma'am. 80. 81 74 मार्क कर लिया आपकी. 81 82 83 Yes, ma'am. okay 84 Yes, ma'am. 84. ओके 69 मार्क कर लिया आपकी. 85 Yes, ma'am. 85. 86 Yes, ma'am. 86. okay 87 Yes, ma'am. 87. 88 Yes, ma'am. 88 present. okay 89 Yes, ma'am. 89 present. 90 Yes, ma'am. 90 present. 91 Present. 92 92 present. 93 94 Yes, ma'am. Present. 95 96 Ma'am, 96. okay 97 Present. 97. okay 61 mark कर दिया. Okay 98
Yes, ma'am. 98. 99, Yes, ma'am. 99. 100, Yes, ma'am. 101, 102, Yes, ma'am. 102. 103. Present, ma'am. 103. ओके, कोई रह गया तो मुझे बता दें प्लीज। 2016 civil 9. 16 civil 09, ओके। Ma'am, 101. Ma'am, 101, 16, civil 103. ओके ठीक है। 103, ओके ओके। एनीवन एल्स? मैम 63 का 201. माइक वर्क नहीं Ma'am, करना, 101, उसने आपको मैसेज भी किया है। 63 की मैंने मार्क कर दी है, ठीक है। 16 सी, 16 सी 09 और 16 सी 103 आप दोनों की मार्क हो गई है, ठीक है। मैम 79 वो मुझे मैसेज कर रहा है कि मैंने मैसेज भी कर दिया और मैंने माइक उसका मार्क कर दी कंप्लीट। है। हाँ जी हाँ जी, मैंने लगा दी है 79 की। मैम 104 भी है क्लास में। अच्छा ठीक है, चलें ठीक है, हो गई है मार्क, कर दी है। ओके, एनीवन एल्स? मैम मैं रिकॉर्डेड लेक्चर सुन रहा था लास्ट टाइम, मैं अवेलेबल क्लास ज्वाइन की हुई थी लेकिन मेरी अटेंडेंस नहीं लगी, तो मैं उसके वाले से आपसे बात करनी थी, आपके साथ जो लास्ट क्लास थी हमारी। लास्ट लेक्चर, उसमें आपकी अटेंडेंस क्यों नहीं लगी भाई? मैम पता नहीं, मैंने अपनी तरफ से बोल दिया, मैंने जब रिकॉर्डेड लेक्चर सुना उसमें तो कोई वॉइस नहीं आई, तो मैंने फिर अच्छा, आप पूछा, मैंने कहा पूछूं। आप बताएं कि क्या डेट क्या थी, याद है? पिछले लेक्चर में डेट क्या होगी? मैम रोल नंबर आपके क्या है? साथ लेक्चर 2, हाँ 89 मेरा। आप मुझे बताएं कि आपका रोल नंबर क्या है? 89? जी मैम 89। हाँ, आपकी मार्क नहीं हुई, 4 तारीख थी। 89, हाँ जी, नहीं लगी हुई आपकी। चलो मैं ऐड कर देती हूँ, ठीक है, कर दी ठीक है। है, शुक्रिया मैम। हाँ जी, ओके, एनीवन एल्स? चलो ओके क्लास, दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ कोशिश करें कि अपनी असाइनमेंट को आप लोग कंप्लीट करना शुरू करें, ताकि उसमें कोई इश्यूज हैं तो हम उसको टाइमली डिस्कस कर सकें और उसको कंप्लीट कर लें, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक वीक ही होता है असाइनमेंट को सबमिट करवाने के लिए। तो अगर तो यूनिवर्सिटी आपने आना नेक्स्ट वीक से, आपने असाइनमेंट को लेकर आएंगे साथ, ठीक। चलें ठीक है क्लास, ओके, थैंक यू।